Hi everyone, welcome to Achievers Academy. Today we are going to discuss a poem, A Tiger in the Zoo. So this poem contrasts a tiger when it is in its natural habitat and when it is imprisoned in a zoo. It's written by George Leslie Norris. So let's start the poem. He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet raid. So the tiger moves a few steps up and down in his cage. The strips on his body are of strong bright color. The tiger moves quietly on his velvety pad. He is full of anger, but he is quiet because he knows that he is very helpless here. So बाघ अपने पिंजरे में कुछ कदम इधर उधर घूमता है. उसके शरीर के ऊपर जो धारियां हैं वो बहुत ही गहरे और चमकदार रंग की हैं. बाघ अपने मखमली गद्देदार तलवों वाले पैरों के ऊपर चुपचाप घूम रहा है. वह क्रोध से भरा हुआ है किंतु वह शांत है क्योंकि वह जानता है कि वो यहाँ पर बेबस है. He should be lurking in shadow, sliding through the long grass near the water hole where plump deer pass. The poor tiger should have been in his natural habitat. Then at this point of night, he would have been lying in the shadows of the tree, sliding quietly through the long grass there near the water hole. He would be waiting for some fat deer to pass the way. So बेचारे बाघ को अपने प्राकृतिक आवास में होना चाहिए था. तब रात के इस प्रहर में वो पेड़ों की छाया में बैठा होता, लंबी लंबी घास में धीरे धीरे चुपचाप सरक रहा होता. वहाँ पशुओं के पानी पीने की जगह पर किसी मोटे ताजे मृग की गुजरने की प्रतीक्षा कर रहा होता. So he should be snarling around houses at the jungle's edge, baring his white fangs, his claws, terrorizing the villagers. In case the tiger failed to find any prey in his natural habitat, the tiger would be growling at the edge of the jungle near some village. There he would be showing his white fangs, claws, while moving here and there. He would thus become a cause of terror for the villagers. And here the poet says that if we destroy the natural habitat of tigers, they will be forced to turn to our towns and villages to find their food. तो किसी गांव के समीप जंगल के छोर पर वह गुर्रा रहा होता यदि वह अपने प्राकृतिक आवास में कोई शिकार ढूंढने में असफल होता. वहाँ वह अपने सफ़ेद नुकीले दांत और अपने पंजे दिखाता, इधर उधर घूमता. इस तरह वो गांव वालों के लिए आतंक का एक कारण बन जाता. यहाँ कवि इस बात की तरफ भी इशारे कर रहे हैं कि यदि हम बाघों की प्राकृतिक आवास को नष्ट कर देंगे तो वह अपना भोजन ढूंढने हमारे नगरों गांव की तरफ मुंह करने को मजबूर हो जाएंगे. But he is locked in a concrete cell, his strength behind the bars, stalking the length of his cage, ignoring the visitors. And the tiger is locked in a concrete cell in the zoo. In spite of all his strength, he now lies imprisoned behind the bars. Very slowly and silently he moves up and down along the length of the cage. He takes no note of the visitors who came to the zoo to have a look at him. अपनी सब ताकत के बावजूद बाघ अपने सलाखों के पीछे बंद पड़ा है. बहुत ही धीरे धीरे और खामोशी से वो पिंजरे की लंबाई के साथ साथ इधर उधर चक्कर काटता है. वह उन लोगों की तरफ कोई ध्यान नहीं देता जो उसे देखने के लिए चिड़ियाघर में आए हुए हैं. He hears the last voice at night, the patrolling cars and the stars with his brilliant eyes at the brilliant stars. So the tiger knows no rest during the day because of the visitors. Even at night also he remains disturbed due to the noise of that patrolling cars. So he keeps staring at the brilliant stars with his brilliant eyes. Perhaps he is asking heaven that why has been imprisoned there. So बाघ को दिन के दौरान वहाँ आने वाले लोगों की वजह से कोई आराम नहीं मिलता. रात को भी वह गश्त करने वाली गाड़ियों के शोर की वजह से बेचैन रहता है. तो अपनी चमकीली आंखों के साथ वह चमकते हुए तारों को देखता रहता है. शायद वो ईश्वर से पूछता है कि वो वहाँ क्यों बंदी बना हुआ है. So that's all from the poem and thank you. Thanks for watching. Keep smiling and have a nice day. Thank you.